हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल डॉट बाय आसी। दोस्तों, होप आप सब लोग ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहें। दोस्तों, आज हम बनाएंगे रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी। फ्रेंड्स, सैलरी के केस में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़्यादा ज्ञान ना बांटते हुए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी या एप्लीकेशन काफ़ी तरह और रीज़न को इन्फॉर्म करके बनाए जा सकते हैं, बट यहाँ हमने मोस्ट कॉमनली टाइप्स को ही इंक्लूड करके अपने लेटर्स बनाए हैं। साथ में टेम्पलेट भी हैं और सैम्पल्स भी। आप इनको रेफर करके अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वेस्ट लेटर्स बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला टाइप है रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी, सिंपल टाइप। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। To the manager, ABC Company, Delhi. Subject: application for last month pending salary. Respected sir, greetings of the day. Hope you are safe and healthy. This is to inform you that I have not received last month's salary. Generally, salaries are credited on 5th day of every month directly to my account. Unfortunately, this month my salary is not credited due to unknown reason. I humbly request to please look into the matter with your earliest convenience. In case any assistance is required from my end, please do not hesitate to reach me. Thanking you sincerely, your name followed by your designation. इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइप आता है रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी इफ सैलरी इज पेंडिंग फॉर मोर देन 1 मंथ। इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर आपकी सैलरी 2 या उससे ज़्यादा महीने से पेंडिंग है, तब आप इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ABC कंपनी, दिल्ली। सब्जेक्ट: रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी अप्रैल एंड मे। Respected sir, greetings of the day. Hope you are safe and healthy. I am working in ABC Company as sales executive. I take this opportunity to inform you that I have not received salary for the month of April and May. I have already notified this matter to my superior, Mr. XYZ. I was informed that same will be credited to my account by end of last month. Unfortunately, this month passed as well and salary is not yet received. Therefore, with this letter, I am notifying your kind sir to quickly resolve this matter. I kindly request to please look into the same on priority and please release my pending salary to my account as soon as possible. Please feel free to reach me if any additional information is needed. Thanking you sincerely, your name followed by your designation. उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी इफ सैलरी इज होल्ड ड्यू टू लॉकडाउन। फ्रेंड्स, ऐसा भी हुआ है कि कंपनीज ने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयज़ की सैलरी होल्ड की है, बट आप उनसे पेंडिंग सैलरी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। To the Human Resource Department, ABC Company, Delhi. Subject: request for pending salary under lockdown period. Respected sir, greetings of the day. Hope you are safe and healthy. I am working in ABC Company as sales executive. I take this opportunity to inform you that I have not received salary under lockdown period for the month of April and May. As per company policy, it was informed that all employees who are working from home will receive full salary. Considering the same, I am eligible to receive the full salary as I was working from home during the mentioned period. For your reference, attach my work report submitted to my manager along with online attendance sheet validated and verified by my immediate superiors. I kindly request to please release my full salary within this month. I shall be highly obliged. Please feel free to reach me if any additional information is required. Request for your earliest response. Thanking you sincerely, your name followed by your designation. इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी इफ फुल सैलरी विल बी पेड आफ्टर लॉकडाउन। अगेन फ्रेंड्स, ये भी केसेस हैं कि कंपनीज लॉकडाउन या वर्क फ्रॉम होम में 50% या 60% सैलरी एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, बट क्योंकि अब लॉकडाउन जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो ऐसे में आप अपनी बैलेंस सैलरी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टू द मैनेजर, ABC कंपनी, दिल्ली। रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर पेंडिंग सैलरी। रिस्पेक्टेड सर, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। होप यू आर सेफ एंड हेल्दी. This is to bring in your kind notice that I have not received my full salary in the month of June as per company policy. During the lockdown, it was informed that employees working from home will be awarded with 70% of the salary and same will be given full once the lockdown period is over. The lockdown ended on 7th June and since then I am coming to office regularly. For your kind reference, attach the attendance record. Same can be verified with our central attendance system as well. I kindly request to please credit my balance salary into my account at the earliest. I shall be available anytime as per your convenience to discuss this matter in detail. Hoping for your quick response. Many thanks in advance for all your kind support and assistance. Yours sincerely, your name followed by your designation.
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी अगेंस्ट पेड मेडिकल लीव। दोस्तों अगर आपकी सैलरी पेड मेडिकल लीव के अगेंस्ट में होल्ड हो गई है या डिडक्ट हो गई है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। टू द HR डिपार्टमेंट ABC कंपनी दिल्ली, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी अंडर मेडिकल लीव। रिस्पेक्टेड सर, greetings of the day, hope you are safe and healthy. This is to state that I am working in ABC company for last 2 years. Last month I was COVID positive and was advised complete bed rest followed by strict quarantine for 14 days, that is from 25th April to 8th May 2021. The reason for this request is that I have received only 50% of my salary. Upon further inquiry, I was informed that my salary is deducted due to my leaves. I wish to inform you that I was on medical leave and as per company policy I am eligible for 2 weeks paid medical leaves. I kindly request to please issue my balance salary on immediate basis as it is already delayed. I shall be highly obliged. For reference, attach my approved leave application taken on the account of medical leave. For any additional information, please feel free to reach me. Thanking you sincerely, your name followed by your designation. इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप आता है रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी अगेंस्ट पेड वेकेशंस लीव। अगेन फ्रेंड्स अगर आपकी सैलरी पेड वेकेशंस के अगेंस्ट में होल्ड हो गई है या डिडक्ट हो गई है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। टू द HR डिपार्टमेंट ABC कंपनी दिल्ली, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी अंडर पेड वेकेशंस। रिस्पेक्टेड सर, greetings of the day, hope you are safe and healthy. I wish to inform you that I am working in ABC company as marketing manager. At the time of joining, I was informed by HR department that once my 1 year is complete, I will be eligible for 7 days paid vacations, which I can reimburse anytime before the year ends. Same is also mentioned in my appointment letter. My 1 year in company completed on 4th Feb 2021. Accordingly, I had applied leave from 6th May to 14th May on account of my paid medical leave, approved by my immediate superior following a proper channel. However, my last month's salary deducted. I kindly request to please release my pending salary with your earliest convenience. For your reference, attach my approved leave application. For any additional clarification, I will be happy to meet your kind self anytime to discuss the same in detail. Thanking you sincerely, your name followed by your designation. इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइप है रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी ऑल्सो स्टेटिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि इसमें आप अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को भी अपने लेटर में मेंशन कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टू द मैनेजर ABC कंपनी दिल्ली, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। रिस्पेक्टेड सर, greetings of the day, hope you are safe and healthy. Through this letter, I am taking an opportunity to inform you that I have not received my last 2 months' salary under the lockdown period of April and May. I have already reported regarding the same in May. When I didn't receive my April salary, I was assured that same will be processed soon. Then later it was informed will be processed in June. Unfortunately, the month of May passed as well. Still my salary is not credited into my account. I am working in your esteemed company for past many years and I do not have any other source of income. I am completely depending upon my salary for various expenditures and now I am suffering from financial crisis along with my family. I kindly request to please take necessary action to release my salary for last 2 months. In case any assistance is needed from my side, please feel free to reach me. Many thanks in advance for your kind support and understanding my situation. Thanking you sincerely, your name followed by your designation. इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप आता है रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी इफ इट इज़ होल्ड ड्यू टू एनी कंपनी रीज़न। दोस्तों अगर आपकी सैलरी किसी नोन या अननोन रीज़न से कंपनी ने होल्ड कर ली है तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टू द HR डिपार्टमेंट ABC कंपनी दिल्ली, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। Respected sir, greetings of the day. I am working in ABC company as senior manager. I take this opportunity to inform you that since last 3 months my 50% salary was on hold. I was informed that due to COVID pandemic the company is having financial issues and only 50% salary will be awarded to senior staff and remaining salary will be paid once office resumes full operation. Last month lockdown is over and as per policy I am eligible to receive my pending salary which amounts 60,000 rupees. I kindly request to please release my salary into my account along with this month's salary. I shall be highly obliged. Thanking you sincerely, your name followed by your designation. इसके बाद फ्रेंड्स आता है लास्ट टाइप रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग सैलरी इफ़ यू हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर आपकी सैलरी आपकी प्रीवियस कंपनी में पेंडिंग है तो भी आप रिक्वेस्ट लेटर सबमिट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं।
to the HR department, ABC Company, Delhi. Subject: request for pending salary. Respected sir, greetings of the day. It is stated with due remembrance that I have not received my pending salary of amount 50,000 till today. I have left the organization a month ago following all procedures of relieving as per company policy. I informed the management a month before my resignation. Moreover, I have fulfilled all the requirements and obtained clearance letter from all departments. I was informed that my salary will be processed in next 10 days. Still after a month, I have not received my pending salary. You are kindly requested to please release my pending salary. I hope for your kind consideration on my request on priority basis. I shall remain grateful. With best regards, your name followed by your signature. दोस्तों यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे पेंडिंग सैलरी रिक्वेस्ट लेटर्स। अगेन इनको आप प्रेफर करके अपने अकॉर्डिंग इनको बना सकते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और क्लोज वंस के साथ भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी रिक्वेस्ट लेटर बनाने में हेल्प हो। साथ ही फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।